अच्छा, इसमें देखें, कल हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज। अब हम पढ़ रहे हैं लिंग्विस्टिक्स के बारे में कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स क्या होती है। लिंग्विस्टिक्स असल में लैंग्वेज की साइंस को कहते हैं, ठीक है, साइंस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक्स इज ग्रोन एंड इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ स्टडी हैविंग अ डायरेक्ट हियरिंग ऑन फील्ड्स एज डाइवर्स एज एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज टीचिंग, कॉग्निटिव साइकोलॉजी and philosophy. What is linguistics? Fundamentally, it is concerned with the nature of language and communication. Definitions of linguistics देख लेते हैं। According to G. Duffy, linguistics observes human action as a means for determining how language has developed and how it functions today and how it's currently evolved. अब कल हमने लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज हम लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि जी डफी कहता है लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स के बारे में कि लिंग्विस्टिक्स ऑब्जर्व करती है लैंग्वेज इन एक्शन एज अ मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग कि वो किस तरह लैंग्वेज डेवलप होती है, वो आप कैसे फंक्शन करती है, हाउ इट करंटली एवॉल्विंग, और अब वो किस तरह से एवॉल्व हो रही है आज के दौर में। According to Aspect Corder, linguistics is concerned with the nature of human language, how it is learned and what part it plays in the life of individual and community. लिंग्विस्टिक्स जो है वो कंसर्न है नेचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज से कि किस तरह ये लर्न की जाती है एंड व्हाट पार्ट इट प्लेज इन द लाइफ ऑफ, कि एक इंडिविजुअल के लाइफ में ये जो लैंग्वेज है वो क्या मतलब पार्ट प्ले करती है और कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो क्या रोल प्ले करती है। फिर है अकॉर्डिंग टू जीन एचिसन, लिंग्विस्टिक्स ट्राइज टू आंसर टू बेसिक क्वेश्चन। लिंग्विस्टिक्स दो तरह के क्वेश्चंस का आंसर करती है, व्हाट इज लैंग्वेज नंबर एक, दूसरा हाउ डज लैंग्वेज वर्क, दैट इज मेरे ख्याल है ये सबसे इजी वाली है। दो डेफिनेशंस आखिरी कि लैंग्वेज जो है वो लिंग्विस्टिक्स जो है वो दो तरह के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करती है कि लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज काम कैसे करती है। मैंने आपको कहा ना लिंग्विस्टिक्स कहते ही स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। और अकॉर्डिंग टू विक्टोरिया ए फ्रॉमकिन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। ये बहुत ज्यादा कंसाइज और अच्छी डेफिनेशन है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसको लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। Linguistics is scientific study of language. By this we mean language is general, not a particular language. If we were concerned with studying an individual language, we would say I am studying French. अगर हम कोई individual language सीखते हैं, study करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि I am studying French, कि मैं study कर रही हूँ French को और English or whichever language we happen to be studying. But linguistics does not study an individual language, it study language in general. लेकिन linguistics जो है वो इंडिविजुअल लैंग्वेज को स्टडी नहीं करती, ये स्टडी करती है लैंग्वेज इन जनरल, ठीक है। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम लिंग्विस्टिक्स में कोई फ्रेंच या इंग्लिश की बात करेंगे, हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर ऑल लैंग्वेजेस इन जनरल, ओवरऑल इंसान जहाँ जहाँ रहते हैं वो जबान से क्या बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, ये सब उसके साथ कंसर्न है। According to Robbins, linguistics is concerned with human language as a universal and recognizable part of human behavior and of human faculties, perhaps one of the most essential to human life as we know it, and one of the most far-reaching of human capabilities in relation to whole span of mankind's achievement. इतनी सारी definitions बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, quit this definition, इसको emit कर दें यहाँ से, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अगर आप 3 डेफिनेशंस भी लिख देते हैं लिंग्विस्टिक्स की, जैसे कल मैंने आपको बताया था, दैट इज मोर देन एनफ। अगेन साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बहुत लंबा नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखेंगे, नंबर आ जाने आपके, ठीक है। मैथ्स में साइंस में इसीलिए मार्क्स ज़्यादा आते हैं, लिंग्विस्टिक्स में भी 80, 85, 90 तक स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं अगर टू द पॉइंट वो लिखें। जितना पूछा गया उतना अगर आप लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद है, does this not sound a little abstract? It is because there is no way of studying language without referring to and taking examples from particular languages. However, even while doing so, the emphasis of linguistics is different. Linguistics does not emphasize practical knowledge or mastery of particular language. Linguistics may know only one language or may know several. Linguistics
एक लैंग्वेज को भी जानती है और लिंग्विस्टिक्स कई लैंग्वेजेस को भी जानती है, और मे इवन स्टडी अ लैंग्वेज they do not know at all. What they are trying to study are the ways in which language is organized to fulfill human needs as a system of communication. और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन तरीकों को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज टू फुलफिल ह्यूमन नीड, कि लैंग्वेज को जो ऑर्गेनाइज किया गया है कि वो ह्यूमन फुलफिल करें ह्यूमन नीड्स को एज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस. ठीक है, एक पर्सन के बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बिटवीन अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा लैंग्वेज का जानता है, कॉल्ड अ पॉलीग्लॉट, एंड अ लिंग्विस्ट. ठीक है, एक लिंग्विस्ट में और एक पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है, हु स्टडीज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन एंड लैंग्वेज बिहेवियर. एक लिंग्विस्ट के अंदर और एक पॉलीग्लॉट जो कि एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो बहुत सारी जबानें जानता है. दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है. एक सिर्फ जबानें जानता है, दूसरा सारे प्रिंसिपल्स भी जानता है. ठीक है, एक लिंग्विस्ट जो है वो स्टडी करता है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन एंड लैंग्वेज बिहेवियर. लैंग्वेज बिहेवियर भी घबराना नहीं, अभी आगे बहुत कुछ आना है. After with reference to some actual language or languages, any language can be taken up to illustrate the principles of language organization. कोई भी लैंग्वेज उसको देखा जा सकता है कि वो इलस्ट्रेट करती है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लिंग्विस्टिक्स का एक पार्ट है. बिकॉज ऑल लैंग्वेजेस रिवील समथिंग ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज इन जनरल, क्योंकि तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो रिवील करती हैं समथिंग ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज, के वो समथिंग ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज को रिवील करती है. We can say that linguistics is learning about language rather than learning our language. तो linguistics actually वो है learning about the language rather than learning our language. इसको अगर आप inverted commas में लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है कि linguistics जो है वो learning about the language है, learning a language नहीं है. ये उर्दू या इंग्लिश सीखने की बात नहीं हो रही. लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, मकामी बोली क्या होती है, क्यों बोली जाती है, डॉक्टरों की जबान कैसी होती है, टीचर्स की जबान कैसी होती है, सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज क्यों बोली जाती है, क्या किया जाता है, ये सब इसके अंदर है. दिस डिस्टिंक्शन इज ऑफन एक्सप्लेन्ड एज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग हाउ अ कार वर्क्स एंड लर्निंग हाउ टू ड्राइव. अब आप इस डिस्टिंक्शन को कुछ इस तरह देख सकते हैं कि किस तरह से एक कार काम करती है और कैसे एक कार ड्राइव करती है. When we learn how to drive a car, we learn a set of habits and do some practice. This is similar to learning how to speak a language. When we learn how the car works, we open up its mechanism. जब भी हम देखते हैं कि कार काम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उस कार को खोल के देखते हैं बनी कैसे हुई है. ठीक है, बच्चों को देख के ना सारे खिलौने तोड़ के अंदर से देखते हैं कि खिलौना बना कैसे हुआ, तो वो उसकी मैकेनिज्म चेक कर रहे होते हैं. और इसी तरीके से when we learn how to drive a car, we learn a set of habits and do some practice. This is similar to learning how to speak a language. ठीक है, जब हमने लर्न करनी होती है टू ड्राइव अ कार तो हम लर्न करते हैं सेट ऑफ हैबिट्स को और कुछ प्रैक्टिस करते हैं. तो इसी तरीके से हम एक लैंग्वेज को भी स्पोकन करने के लिए, स्पोकन कोर्स करने के लिए हमें लैंग्वेज बोलनी पड़ती है. When we learn how the car works, we open up its mechanism, study it, and investigate the relationship of its parts to one another. This is similar to what we do in scientific study of language or linguistics. We investigate the mechanism of language, its parts, and how all these parts fit together or to perform particular functions, and why they are arranged or organized in a certain manner. Just as while driving a car, we are using its various components. While speaking language, we are using the sounds, words, etc. of that language. Behind these uses and mechanism which enables us to do so, we study language because it is important for us to understand its mechanism. ये तो हो गया जनाब linguistics के बारे में in general. अगर आ गया तो आप general एक दो जो है इसमें जो शुरू में हमने 3 definitions दी हैं. कार वाली आप एग्जाम्पल देंगे कि कार को सीखने और कार को चलाने में, यानी कि कार की मैकेनिज्म को सीखने में और कार को चलाने में दोनों में फर्क होता है. इसी तरह जो है एक बोली, एक लैंग्वेज को बोलने में और एक लैंग्वेज को के मैकेनिज्म को पढ़ने में, यानी कि लिंग्विस्टिक्स में फर्क होता है.
अब क्वेश्चन अक्सर आता है, आपने पास्ट पेपर्स में पढ़ा होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस, इज लिंग्विस्टिक्स अ साइंस? क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है. लिंग्विस्टिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ साइंस इन बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक वर्ड. ठीक है, लिंग्विस्टिक्स जो है वो उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है as a science in both general or specific terms. Generally, we use the term science for the knowledge that is based on clear semantic and rational understanding. Science को हम क्या कहते हैं कि एक knowledge है जो कि base करता है on clear semantic and rational understanding के ऊपर. Thus, we often speak of the science of politics or statecraft or the science of cooking. However, we also use the term science for the systematic study of phenomena, enabling us to state some principles or theories regarding the phenomena, and a study proceeds by examination of publicly verifiable data obtained through observation of phenomena and experimentation. In other words, it is empirical and objective. Science must also provide explanation after adequate observation of data. साइंस जो है वो प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेशन किसके बाद, जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन और फिर वो जो आपने हाइपोथेसिस एंड दिस एंड दैट वो बहुत कुछ पढ़ा होगा, व्हिच कुड बी should be consistent. Thus, for example, there should be no contradiction between different parts of explanation or statement and economical, such that precise and non-redundant manner of statement is to be preferred. Let us apply these criteria of science to linguistics. Linguistics studies language. Language is a phenomena which is both objective and variable. Like natural phenomena in the physical world, it has a concrete shape and occurrence. ठीक है, एक नेचुरल फेनोमेना जो कि फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं उसकी कुछ कंक्रीट शेप होती है और अकरेंस होती है. इन द सेम वे अ फिजिकिस्ट, केमिस्ट और केमिस्टिक मटेरियल्स एंड मेजर्स देयर वेट, densities, etc. to determine their nature. The linguist studies the component of language. For example, observing the science, ठीक है कि वो for example, observing the occurrence of speech sound or the way in which words begin or end. ठीक है, यहाँ पे बेटा ऊपर देखिएगा, ये मैं कंप्लीट करूँ फिर आपको ये बताती हूँ, ये जो दो चार definitions लिखी हुई. Language, like other phenomena, is objective because it is observable with the senses, such that it can be heard with the ear, it can be seen with the vocal organs, or in moment or when reading words on a page. ऊपर देख लें बेटा साइंस क्या होती है. Science is defined as a knowledge that is based on clear, systematic and rational understanding. सिस्टमैटिक स्टडी, साइंस की ही बेटा ये डेफिनेशंस हैं. सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फेनोमेना एनेबलिंग अस टू स्टेट सम प्रिंसिपल और थ्योरीज रिगार्डिंग द फेनोमेना. ये ऊपर अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था. और स्टडी प्रोसीड्स बाय एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिकली वेरिफेबली डाटा एंड ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ये एम्पायरिकल एंड ऑब्जेक्टिव बुक है एक, उसके अंदर लिखा हुआ है. ईच ऑब्जर्वेबल फेनोमेना इज टू बी गिवन अ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन. इट्स नेचर हैज टू बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली. ठीक है, इस तरीके से हर चीज की एक साइंस होती है और ये टोटल साइंस का पूरा ओवरऑल उसकी डेफिनेशन लिख दी गई है. उसके बाद वो कहता है कि ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं, ऑब्जर्वेशन लीड्स टू प्रोसेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन. इन साइंस ईच ऑब्जर्वेबल phenomena is to be given a precise explanation. Its nature has to be described completely. Thus, for example, the chemist classifies elements into metal and non-metal. इसी तरह एक जो केमिस्ट होता है वो क्लासिफाई करता है. क्लासिफाई क्या करता है? दो चीजों को अलग-अलग उसमें फर्क बयान करना. इनटू मेटल्स, वो एलिमेंट्स को डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में. A biologist classifies living things into plants and animals. In the same way, linguists observe the feature of language, classifies these features as being sound features of particular types of words belonging to particular classes on the basis of similarities or difference with other sounds and words. But while linguistics share some of the characteristics of empirical experimental science, it is also a social science because it studies language, which is a form of social behavior and exists in interaction between human beings in society. Language is also linked to human mental processes. For these reasons, it cannot be treated always as objective phenomenon.
फिर वो कहता है कि लिंग्विस्ट जो है वो लिंग्विस्टिक्स जो है वो शेयर करती है, जैसे साइंस जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, इसी तरह लिंग्विस्टिक्स भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पायरिकल एक्सपेरिमेंटल साइंस को शो करती है। इट इज ऑल्सो अ सोशल साइंस। इसको लिंग्विस्टिक्स को हम सोशल साइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इट स्टडीज लैंग्वेज विच इज फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। ये स्टडी करती है लैंग्वेज को जो फॉर्म है सोशल बिहेवियर की, और एग्जिस्ट करती है ह्यूमन बींग्स की इन सोसाइटी। लैंग्वेज ही तो एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। लैंग्वेज जो है वो अल्लाह ताला का एक बहुत ही, जबान अल्लाह ने जानवरों को भी दी है, ठीक है, जबान दी है ना सबको, जानवरों को भी दी है, लेकिन इवन कहते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये बेजबान होते हैं, लेकिन वो फील सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो लैंग्वेज जो है, जबान देने के साथ साथ अल्लाह ताला ने अगर हमें लैंग्वेज की एक नेमत दी है, तो बेटा सोचें हम कितने खुश नसीब हैं। तो लैंग्वेज इज ऑल्सो लिंक टू ह्यूमन मेंटल प्रोसेस। ये हमारी जो लैंग्वेज है हमारे ह्यूमन मेंटल प्रोसेस से भी रिलेट करती है, लिंक करती है, क्योंकि फॉर दिस रीजन इट कैन नॉट बी ट्रीटेड ऑलवेज एज ऑब्जेक्टिव फेनोमेना। इस वजह से क्योंकि ये हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेट करती है, नॉट ओनली मेंटल प्रोसेस से रिलेट करती है बल्कि सोशल साइंस से भी, यानी कि ह्यूमन बींग्स इन सोसाइटी से भी रिलेट करती है। ये दोनों चीजें डिफरेंट है। मेंटल प्रोसेस से रिलेट करती है, इसको साइकोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं, और ये जो सोसाइटी से लैंग्वेज रिलेट करती है, साइंस ऑफ मतलब सोशल साइंसेस जिसे हम कहते हैं, उसको हम सोशल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ये जो लैंग्वेज एक सोसाइटी के अंदर बोली जाती है उसको सोशल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है, लेकिन वो लैंग्वेज जो हमारे ह्यूमन मेंटल प्रोसेस है उसको साइको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे जाके हम इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। In empirical sciences, the method of observation and experimentation are known as inductive procedures that phenomena are observed and data is collected without any preconceived idea or theory, and after the data is studied, some theory is formulated. This has been the main tradition in the history of Western science. But there is an opposition tradition, the tradition of rationalism, which holds that mind forms certain concepts of ideas beforehand in terms of which it interprets the data observation and experience. According to this tradition, the deductive procedure is employed in which we have a preliminary hypothesis or theory in our minds, which we then try to prove by applying it to the data. This procedure was considered to be unscientific according to empirical scientists because they felt that pre-existent ideas can influence the kind of data we obtain, such that we search only for those pieces of data that fit our theory and disregard others, and therefore it is not an objective method. We can, however, reconcile these two procedures. There are aspects of language which we can observe quite easily and which offer concrete instances of objective and verifiable data. At the same time, we need to create hypotheses to explain this data, so we may create tentative or working hypotheses to explain this data, which we may accept, reject or modify as we proceed further. अब वो कहता है कि ये जो एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं इजीली, और जो विच ऑफर कंक्रीट इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव और वेरिफिएबल डाटा, अब वो कहता है उसी वक्त जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं जो कि हमें ऑफर करता है कंक्रीट इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव और वेरिफिएबल डाटा, यानी कि जब हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं सारी बात है वो बहुत सारे कंक्रीट इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव और वेरिफिएबल डाटा भी हमारे सामने आ जाता है, तो उसी वक्त हमें एक हाइपोथेसिस क्या होता है, एक एजम्पशन होती है कि ये चीज अगर ऐसे है तो इसको अगर वैसे कर दिया जाए। यही साइंस है ना। हाइपोथेसिस में क्या होता है, एक मफरूजा होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन होती है, देन जो है वो एक्सपेरिमेंट होता है और देन फिर उसके एंड में जाके कंक्लूजन बनता है। फिर वो कहता है वी नीड टू क्रिएट हाइपोथेसिस, हमें एक हाइपोथेसिस यानी कि एक मफरूजा होता है टू एक्सप्लेन दिस डाटा, सो वी मे क्रिएट टेंटेटिव और वर्किंग हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन दिस डाटा, कि जी हम एक सोच ले लेते हैं, एक हाइपोथेसिस ले लेते हैं और फिर हम उसके पीछे एक डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर फाइनली विच वी मे एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई, और फिर हमें उस मफरूजे के तहत या तो उसको एक्सेप्ट करना होता है उन थ्योरीज को, डाटा को कलेक्ट करने के बाद,
या हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं या हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं एज वी प्रोसीड फर्दर। फिर वो कहता है विद सच एन ओपन एटीट्यूड वी मे कलेक्ट मोर डाटा, और इसी ओपन एटीट्यूड में हम और भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दिस ऑल्टरनेशन ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव प्रोसीजर्स may help us to arrive at explanations which meet all the requirements of science, such that they are exhaustive, consistent, and concise. Thus, linguistics is both an empirical science and a social science. In fact, it is a human discipline since it is concerned with human language, so it is part of study of humanities as well. This includes the study of literature and appreciation of the beauty and music of beauty. In understanding language, humankind can understand itself. Moreover, since every branch of knowledge uses language, linguistics is central to all areas of knowledge. In regard to linguistics, the traditional distinction of science, art, and humanities are not relevant. As Lyons put it, linguistics has natural links with a wide range of academic disciplines. Linguistics के जो natural links हैं with a wide range of academic disciplines के, to say that linguistics is a science, not to deny that. By virtue of its subject matter, it is closely related to such eminent human disciplines as philosophy and literary criticism. ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है कि इज लिंग्विस्टिक्स अ साइंस।